નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ઓનલાઈન એજ્યુકેશન નીલકંઠ સ્કૂલ મોરબી આપ સૌનું સ્વાગત કરે છે. ધોરણ 5 વિષય હિન્દી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં પાના નંબર 36 ઉપર જોવાનું છે. અભ્યાસનો પ્રશ્ન નંબર 3 છે. આપણે આગળના લેક્ચરમાં પાઠ 6 હસીકા પિટારા ચુટકુલે વિશે સમજી ગયા અને અભ્યાસના પ્રશ્ન 1 અને 2 એ પણ આપણે જોયું હતું કે વિદ્યાર્થીઓએ જાતે ચુટકુલે લખવાના છે. હોમવર્કમાં તેમજ સમાચારમાંથી ગોતીને કોઈ અન્ય જગ્યાએથી ગોતી અને હિન્દીમાં ચુટકુલે લખવાના છે. હું તમને જો મીટિંગમાં પૂછીશ. આજે આપણે પાના નંબર 36 ઉપર પ્રશ્ન નંબર 3 જોવાનો છે. निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए. विलोम शब्द ગોતીને આપણે લખવાનો છે. વિલોમ એટલે કે વિરોધી શબ્દ. તો સુબહનું વિરોધી શું થાય? સુબહ એટલે સુબહનું વિરોધી શામ. સુબહનું વિરોધી શામ. સુખાનું વિરોધી તો કે ગિલ્લા. મૂર્ખનું વિરોધી તો કે બુદ્ધિમાન. ગલતનું વિરોધી સહી. દિનનું વિલોમ તો કે રાત. દોસ્તનો વિલોમ તો કે દુશ્મન. ફરી એકવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ આપણે. સુબહ, સુબહનો વિલોમ શબ્દ થાય શામ. સુખા, ગિલ્લા. મૂર્ખ, બુદ્ધિમાન. ગલત, સહી. દિન, રાત. દોસ્ત, દુશ્મન. તો આવી રીતે આપણે વિલોમ શબ્દ ગોતીએ. બેમાંથી ગોતીને લીધા. ચાલો હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય બનાવવાના છે. પાના નંબર 37 ઉપર જોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો. એમાં પેલું ઉદાહરણ આપણને આપેલું છે વિલોમનું. ઉપયુક્ત વિલોમ શબ્દ પર આધારિત વાક્ય બનાએ. જો ઉદાહરણ આપ્યું, मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था. मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था. એવા આપણે શબ્દ હમણાં બનાવ્યા ને આપણે આગળ, એના સુબહ તો શામ એવા વાક્ય બનાવવાના છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાંભળો. मैंने सोचा सतीश सुबह में आएगा लेकिन वो शाम को आया. मैंने सोचा सतीश सुबह में आएगा. मैंने सोचा सतीश सुबह में आएगा लेकिन वह शाम को आया. બીજું વાક્ય બનાવીએ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો દોસ્તવાળું. दोस्तનો विलोम शब्द दुश्मन. लोग मैं समझ रहा था कि अनिल मेरा दोस्त है. मैं समझ रहा था कि अनिल मेरा दोस्त है लेकिन वह तो दुश्मन निकला. मैं समझ रहा था कि अनिल मेरा दोस्त है लेकिन वह तो दुश्मन निकला. હવે બીજું વાક્ય જોવી વિદ્યાર્થી મિત્રો. दिन, सूर्योदय होने से दिन होता है. सूर्योदय होने से दिन होता है और सूर्यास्त होने से रात होती है. सूर्योदय होने से दिन होता है, सूर्यास्त होने से रात होती है. આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો. सूखा, मैंने सोचा मेरा पजामा सूखा था. सूखा होगा. मैंने सोचा था कि मेरा पजामा सूखा होगा और लेकिन तो वो गीला निकला. मूर्ख,
लोग भोलू को मूर्ख समझते थे। लोग भोलू को मूर्ख समझते थे, लेकिन वह तो बुद्धिमान निकला। लेकिन वह तो बुद्धिमान निकला। लोग समझते थे कि भोलू मूर्ख था, लेकिन वह बुद्धिमान निकला। આપણે ગલતનું વાક્ય જોઈ લીધું। मैंने सोचा उत्तर गलत होगा। उत्तर गलत होगा, लेकिन वो तो सही निकला। આવી રીતે આપણે વાક્ય બનાવવાના છે, ફક્ત સમજવાનું જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। આગળ પ્રશ્ન નંબર 4, इन्हें और क्या कहते हैं छाँट कर लिखिए। इन्हें और क्या कहते हैं छाँट कर लिखिए। આપણે આગળ વિલોમ શબ્દ જોયા, તો હવે આપણે કયા શબ્દ જોવાના છે? સમાનાર્થી શબ્દ જોવાના છે। ઉપયુક્ત સમાનાર્થી શબ્દ આધારિત વાક્ય બનાવે। હવે આપણે સમાનાર્થી શબ્દ જોવાના જોઈએ। દોસ્ત તો એનો અર્થ થાય મિત્ર। દોસ્તનો સમાનાર્થી અથવા પર્યાયવાચી અર્થ થાય મિત્ર। સુબહ એનો જે પર્યાયવાચી અર્થ થાય સુબહ તો પ્રાતઃકાળ। सुबह तो प्रातःकाल। मूर्ख तो बेवकूफ़। मूर्ख तो बेवकूफ़। वक्त तो समय। वक्त तो समय। फरी एक बार विद्यार्थी मित्र जोईए आपणे। दोस्त तो मित्र, मूर्ख तो बेवकूफ़, सुबह तो प्रातःकाल ने वक्त तो समय। समझाई गयुं? दोस्त तो मित्र, मूर्ख तो बेवकूफ़, वक्त तो समय, सुबह तो प्रातःकाल। हवे विद्यार्थी मित्रों આપણે તેના વાક્ય બનાવી બે चलो राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। बीजू वाक्य जोईए आपणे। मूर्खनु। मूर्ख मूर्ख तो मूर्खनु वाक्य जोईए आपणे। कालिदास मूर्ख था। कालिदास बेवकूफ़ था। कालिदास मूर्ख था। कालिदास मूर्ख था। कालिदास मूर्ख था। कालिदास बेवकूफ़ था। हवे त्रीजू वाक्य है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं प्रातःकाल जल्दी उठता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं प्रातःकाल जल्दी उठता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं प्रातःकाल जल्दी उठता हूँ। वक्त वक्त तो समय। इस वक्त गाड़ी जा रही थी। इस वक्त गाड़ी जा रही थी। इसी समय गाड़ी जा रही थी। इस वक्त गाड़ी जा रही थी। इसी समय गाड़ी जा रही थी। समझाई विद्यार्थी मित्रों? આવી રીતે વાક્ય બનાવવાના છે। આપણે બનાવવાના આગળ એટલે ફક્ત સમજવાના છે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે જે હિન્દીનો છઠ્ઠો પાઠ છે તે પૂર્ણ થાય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડાક પ્રશ્ન છે, પાઠ્યપુસ્તકોમાં તો નથી આપેલા, પણ સ્વાપોથીમાં થોડાક પ્રશ્ન છે તે આપણે અત્યારે થોડાક જોઈએ। माँ ने बाहर क्या सुखाया था? माँ ने बाहर गेहूँ सुखाया था। बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला? बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था। विद्यार्थी मित्रों फक्त प्रश्न जवाब समझवाना ज छे तमारे।
2 વાર હું પ્રશ્ન જવાબ બોલીશ, પ્રશ્ન અને તેનો જવાબ 2 વખત બોલીશ, તમારે યાદ રાખવાનો છે. પહેલો છે પ્રશ્ન, માને બહાર ક્યાં સુકાયા થા? માને બહાર गेहूँ सुखाया था अथवा गेहूँ सुखाए थे. बीजो प्रश्न है, बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला? बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था. बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला? बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने को कहा था. दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहते हैं? दोस्त दीपक को मूर्ख कहते हैं क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता. दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है? तीजो प्रश्न है, एनो आंसर दोस्त दीपक को मूर्ख कहता है क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता है. प्रश्न नंबर 4, व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है? व्याकरण की दृष्टि से दीपक कर्ता है. कर्ता એટલે શું થાય? જે કાર્ય કરતો હોય માણસને કર્તા કહેવામાં આવે છે. चौथा प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से दीपक कर्ता है. 5मो प्रश्न है, रसोई घर में बिल्ली क्या कर रही थी? रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही थी. 5वां प्रश्न, रसोई घर में बिल्ली क्या कर रही थी? रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही थी. 6ठो प्रश्न है, नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? 6ठो प्रश्न, नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया एनो आंसर है क्योंकि उसे मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझे पूछ लिया करो. 7वां प्रश्न है, रामू ने श्यामू से क्या पूछा? 7वां प्रश्न, रामू ने श्यामू से क्या पूछता है? रामू श्यामू से पूछता है क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा था? फिर एक बार, रामू श्यामू से पूछता है क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? 8वां प्रश्न है, श्यामू रामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है? श्यामू रामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है? आंसर, श्यामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है, मूर्खो क्या ये गधा नहीं कूदता है? मूर्खो क्या ये गधा नहीं कूदता है? तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણો પાઠ 6 પૂર્ણ થાય છે અને હું વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઠ 6 અહીંયા પૂર્ણ થઈ જાય છે. ઓકે.